this as far as unethical practices are concerned? Simply because we don't have that fear factor now. We know that we won't be caught. That's the prime reason why the unethical practices, as far as in research is concerned or academics is concerned, needs to be tackled in terms of there is a prime need for conducting this kind of talks, not just talks, but primarily in terms of having those texts to actually control this kind of rampant, unethical, unmoralistic malpractices that is actually being there in the academics. What are ethics basically? I need to be defining this ethics. Everyone knows what is right and what is wrong. Everyone knows what is ethical and what is unethical. We basically define ethics as in terms of moral principles that governs a person's behavior. And research ethics may similarly be referred to as doing what is morally and legally right in research. They are actually norms uh, for conduct that distinguish what is right and what is wrong, what is acceptable and what is unacceptable behavior as far as the research is concerned. Uh, this is very important to remember right at the start that ethics in general and research ethics in particular, they embraces both your personal behavior as well as the institutional morality. I'm talking about not just your behavior as an individual, but what are the mm, institutional guidelines and what is the role that is actually played by the institution, college or the university or any research institute. So, as a concept, I would say that research ethics refers to a complex set of values, standards, institutional schemes or guidelines that help constitute and regulate the scientific activity. And this is precisely as far as the definition of ethics in research. Why ethics in research? Is similar to asking why ethics in life. And the answer as relates to research is very simple. Practicing ethics promotes the aims of the research, such as knowledge, such as truth, such as non-violence, such as avoidance of errors. Uh, just for an example, the prime unethical practices that you actually define basically in terms of three broad words. One is fabrication, the other is falsifying, and the lastly is plagiarism. These are the three important terms that one should actually refer to when you actually talk about unethical practices. So, uh, basically, when you talk about these three important terms, fabrication means that you are trying to modulate, you are just trying to fabricate the results which are actually not there. Falsifying is that you are representing or you are producing what is actually uh, uh, manipulated kind of research, which is false entirely. And plagiarism, which obviously Dr. Wu's will be talking about, is basically trying to uh, what you basically just copy the other's work and represent that as yours without any acknowledgement, without any citation and that kind of thing. That is the extreme form of unethical practices as far as the research is concerned. Now, back to what I was actually talking about, that the ethical practices in research is not just individualistic, but also institutional. It involves the cooperation and coordination among many different people uh, belonging to different disciplines and institutions. And this is very important when you actually talk about the collaborative kind of effort that actually goes into the research. That means you are actually talking about the trust, you are actually talking about accountability, you are talking about the mutual respect that one should have, and you are basically talking about fairness that actually has to be there as far as the research is concerned. So, uh, why all this? Because there there are a lot of examples where this kind of collaboration, that kind of the fairness and the
accountability or truth that I was talking about basically relates to the certain kind of uh, guidelines or certain kinds of activities that obviously goes with the conduction of the research, as well as in terms of carrying out the publication work, that is the culmination of the research that you have actually carried out, in terms of authorship, in terms of the copyright, in terms of patenting principles, in terms of how do you actually share the data, in terms of what should be the confidentiality clauses or the rules that actually governs the peer review. Peer review is something that when some institution or the journals, they actually send you some of the papers for review. How do you actually conduct that review process is called the peer review. And what should be the kind of confidentiality, what would be the clauses that defines the peer review. हेलो. These are all हाँ, that तभी actually तो हमने बोले. relates to the intellectual ठीक है, property, ठीक. because the property is different kind of, ठीक है. in terms of not that time in चलिए, terms of stealing someone's property. We are when you talk about the research, you actually talk about the intellectual property, copyrights, and all. So it's very important that this kind of talk on ethics and what are ethical guidelines that should govern your kind of research, the conduction basically in subsequently publication and other activities, very vital. Uh, it's very important right at the start to say that ethical practices remain important primarily because you are accountable to the public. And let me cite one example before I actually start my talk on the ethical guidelines, basically. You must have heard about Schumacher. Schumacher wrote a book which was titled as Small is Beautiful. And this book actually should be read by every individual, even though the book is written by an economist. Uh, but it actually, the content matter is basically about how to conduct research and what are the moral principles. There is a separate chapter on Gandhian principles of non-violence and how that non-violence relates to the your own behavior as far as your life is concerned. There is one quotations there, or there is a study which is being reflected by Schumacher in his book. And that study actually relates to this fact, which was actually conducted by the Chinese before the Second World War. And this study pertains to fact that around 30 pigeons work, or 30 pigeons work annually, actually uh, finances the university education of one particular individual. Uh, and if one particular individual spends 5 years in university, it means you just multiply the figure 30 into 5, that is 150 present work. मतलब annually जो 150 लोग earn करते हैं, that amount of money actually finances your education, your higher education. And this study pertains to 1939, before the Second World War. Obviously, the amount of the financial input that goes into your higher education, and particularly as far as the research is concerned, will be much more higher. Uh, what it actually means is that your education or your research is being funded not just by yourself or by your own institute or your parents, but there are a whole lot of individuals earning in terms of the taxpayers' money that goes into your research. This realization of this fact alone should make you uh, morally responsible to what the society actually needs. The second important thing before I actually start beginning the talk is that you are accountable to the public. As I said, your accountability means your research is not just for yourself. This is very, very important. Your research is not just for your self gain, but it is for the betterment of the society. This fact I will be emphasizing more and more. This is the basic underlining. This is the basic underlying sentence that should be emphasized right at the beginning and by the end of this particular talk. That your research is not for yourself, not for your self promotion, but this is primarily
for the societal gain, how your research actually adds up to the literature, how your research actually adds up to the betterment of the society, how your research basically aims to uh, falsify or negate what is wrong in the society. This is all the basic aims of the research. Uh, your basically in terms of social responsibility, in terms of your human rights, in terms of your how do you actually conduct the research in terms of your animal welfare, how do you actually comply with the prevailing law, uh, do you actually subscribe to the health and safety of the individual or the subjects which are informants or which are actually part of your research. These are all the ethical concerns that should actually be tackled beforehand, one once the actually the individual takes up the research. Uh, uh, Now, one should actually define what is ethical and what is unethical. Uh, when you actually talk about the plagiarism case, there is a term called misconduct. Misconduct primarily means when the action is deliberate, when you are trying to fabricate, when you are trying to falsify, when you are trying to plagiarize uh, deliberately, knowingly. That is misconduct. When the intentions is not there, when primarily because the information or the guidelines that you are not aware of, and because of that you actually conduct a sort of what will be termed as plagiarism, that won't be termed as a misconduct. So misconduct is primarily when you try to deliberately undertake what is wrong, what is morally wrong. uh, for example, as far as my own observations are concerned, uh, when I relate to the kind of research being conducted in our own fraternity, I find that when you are publishing the paper in two different journals, same paper getting published in two different journals, even though you certify that the paper is being presented for the first time, you do it knowingly because you are not certain that the journal is going to publish your work. So just to reduce their time for evaluation, you are giving the same paper to two or three different journals with the hope that one of the journals will might accept your paper. This is what is unethical. Then you submit the same paper, just changing the title of the paper. Otherwise, the whole content is the same. Or you actually similarly you actually submit a thesis which is nothing different from the other thesis that you have actually copied. You just manipulate the kind of data with some decimal places and the change the title of the thesis. Suppose there is an ecology of one particular river, you change the name of the river, and otherwise the thesis remains the same. This is the kind of unethical practices that you actually come across. Then, when you are undertaking a collaborative research, without telling your collaborator, you actually publish the work as your own. This is unethical. Then, uh, and this is very common observation that one includes the name of a person who has nothing to do with the research in his or her own paper getting published, just to what be favorable to the other person. दिस हैज एक्चुअली बीन एक्चुअली ऑब्जर्व्ड. जैसे कि हमारे कॉलेजेस में अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं, get the promotion, you need certain number of fixed number of papers getting published. And obviously, there are persons who also are entitled to be promoted, but they don't have the requisite number of the published paper. So what they do, they ask their colleague to include their name, and similarly they will reciprocate in terms of what they are writing and include the name of the other person also. So what collaboratively in this kind of what do you say, uh, malpractices, you have a number of papers. You will come across when you actually get selected for a particular post or the administrative post, what do you actually find written about that particular person in the newspapers? They will say that this person who is now occupying a prominence seat. Uh, he has got around 100 papers, research paper in his name, or 200 research papers in his name. It's entirely impossible until and unless they have this whole
network of individuals who are collaboratively working in terms of, if someone is working in different field, the other is working in different field, but collaboratively they will include everyone's name which are the part of their team, and so the number of the papers goes up. This is the kind of unethical practices that go, or that is actually promoted by the kind of administration, because the administration is actually looking for the number of the papers and not for the quality of the papers that should be published. This is what the institutional part of the research is concerned. Similarly, you find that you get a one particular paper from the journal for reviewing, and you actually copy or you actually use the data which has been produced or not published by that particular person, because the paper is still undergoing the review, and you use that particular data for your own work. This is unethical. You know what is actually unethical and ethical. Your conscience actually tells you that this is wrong, but you actually do it. Similarly, there are instances where you actually manipulate the data. You actually manipulate the data, and this is very uh, rampant. This is the most common practices which actually I have observed when I actually review the papers or the even the thesis that actually comes to me. Uh, then just to manipulate or just to extrapolate your kind of result, you actually use certain statistical method that actually represents what you actually want to represent and not what actually is. It is very, very important. Research shouldn't be as per your wishes or as per your own terminology in terms of what you say. This is what I want to represent rather than what actually is coming out of your research. So you actually falsify the data. Then there is uh, a tendency to bypass the peer review process. There are a number of journals, so there are a number of now uh, uh, what you say the institutions that have actually cropped up, because they know because of the UGC guideline you need to publish a number of papers. So if you actually want to publish your work and in a reviewed journal or in an elite journal, obviously there are very less chances that your paper will get approved, because it will go with the review process, that it will all go with the anti-plagiarism software. You know what you have done. So the easier way is to get publish your work through these kind of agencies or the institutions which actually promises you that your paper will get published within a week. And that is entirely impossible because that is not undergoing the reviewing process. What they want, that these institutions, they want only to earn money, and you want your paper to be published. And there is this kind of mutual understanding between you and the kind of institution that you actually present or submit your paper for just getting published. So this is unethical. Then uh, when reviewing basically the kind of literature that should be there when you undertake the research, you don't acknowledge the scientist or the person who have actually undertaken this study. You actually copy down his sentences verbatim without any making any change, without making use of the quotations, uh, without underlining or emphasizing the citation, not just in the text part, but also in the reference section. This is pure plagiarism, and that is actually, uh, as I said earlier, also is one of the common practices that actually, or rather, malpractices that is actually that occurs as far as the presently the case is concerned. So the other important aspect I want to talk about the unethical practices that is relating to even though there are guidelines set by the institution or the university that every thesis which is being uh, submitted should undergo the anti-plagiarism software. That doesn't take place. There is no transparency as that has taken place or not. Then there is a tendency where you know the kind of work that has been carried out, but you want that your research scholars should get the PhD. What do? You try to manipulate or you try to convince the person which is responsible for sending your thesis to different experts. Those number of experts you have, whether they are actually competent to undertake the review of that particular cases, that is not of primary concern. You want that particular person is known to you, and that will actually extend the favor to you just by passing.
that particular thesis within a stipulated time or even within a month. That is the kind of activity that is actually going on as far as the research is concerned at the institutional level. So these are all malpractices, and that should be condemned and that should be checked. So I will start with the actual talk that is related to the ethical practices now. Uh, when just at the start or before the start of this particular talk, I just inquired from the organizing secretary, that is Uroshi, about the number of the individuals or the research scholars who are actually taking part in this particular program. And for them, before I talk about the ethical practices, this is very important. How do you actually start out the journey called research? How do you actually plan to undertake the research? Did you actually select the topic of the research by yourself, or it was the guide? You should ask. Did you actually take the under extensive literature survey before deriving at the precise objective that you want to actually undertake in the research? If yes, then did you actually undertake the feasibility study, whether it's feasible for me to undertake this kind of research, whether even though I'm interested in conducting this research, whether it's feasible or not? Did you take this kind of prior information from the institute that actually you joined? Did you actually decide upon your guide itself? It's unfortunate that the research scholars who are called for the counseling, they are given a guide without their knowledge. So whether the student has actually taken a prior consent or prior meeting with the prospective guide that he or she actually wants, this is very important. Uh, then after the broad literature that you have conducted, are you sure that the research you have decided to undertake will add to the growing literature in your own subject, or better still, will it be of the societal benefit? This is very, very important. So, this is important before the conduction of the field work or before you undertake a research. Basically, you have actually undertaken all these activities or not. This is very, very important. Because if you have not, that you are not at all sincere about your work that you are going to pursue. If you have taken, that itself means that you are very sincere. You are actually serious about your research. If you have not done this kind of work prior to the joining the faculty or joining the kind of, you have already decided that the guide decides the uh, field work or guide decides your topic of research, that means that you are not at all sincere about research. And during the conduction of the work or before the conduction of the field work, if there is entitled to they are entitled to to carry out the field work. So are you feeling uh, that the task is challenging, or you are actually feeling at ease? एट इज मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि जो फील्ड वर्क है बड़ा आसान है और जो टास्क हमें दे रखा है बहुत आसान है, इसका मतलब है कि आसान ही जो है तुमने ये सोचा कि जो चीजें जो है आसान होंगी, इसका मतलब है कि दैट वर्क इज नॉट गोइंग टू प्रूव ऑफ बेनिफिट बेसिकली, इट इज नॉट गोइंग टू बी adding to the growing literature, as I said, or it is not going to have any beneficial effect on the society at large. So the task has to be challenging. Well, you expect that the field work is going to be challenging. You expect that the research work conducted in the lab is going to be challenging. Until and unless you don't feel like that, that means you have taken a very easier way of conducting research. वो जो है मुझे याद नहीं है कि वो किसकी कविता है, लेकिन वो ये है कि उसमें एक लाइन है, a road diverged in the woods and I took the road less traveled, and that all made the difference. And this is what should be the your basic guidelines should concern when you actually select the research. जो चीज नहीं की गई है, जो चीज जो है नहीं होगी, जो चीज किसी ने पहले नहीं किया है या फिर किया भी है तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो अधूरे रह गए हैं, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू शुड एक्चुअली परस्यू. और अगर आपको लगता है कि वही चीज मुझे रिपीट करनी है, वही चीज मुझे रेप्लिकेट करना है जो ऑलरेडी हो गया है और वो आसान भी लग रहा है मुझे, और ये निश्चित तौर पे मैं आसानी से कर सकूंगा या कर सकूंगी, तब इसका मतलब है कि आप जो है यू आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट कंडक्टिंग योर रिसर्च. अब मैं आता हूँ कि जो गाइडलाइंस एज फार द एथिकल कंसर्न्स आर कंसर्न, वो पहली बात तो ये है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस, व्हाट आर योर guidelines or the ethical practices that you actually should pursue
एज एन इंडिविजुअल। पहली बात तो ये है कि ऑनेस्टी, impartiality, and the willingness to accept that no one is infallible. This is very very important. अगर आप फील्ड में जाते हैं और आप ये शो करते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा नॉलेज है, तो मुझे जो बताया जा रहा है या जो लोग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं वो बड़े जो है प्रिमिटिव बैकग्राउंड के हैं, उनके ख्यालात बहुत पुराने हैं। व्हाट आई नो इज फार मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप इस मानसिकता के साथ फील्ड में काम करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो है यू आर बाउंड टू फेस फेलियर। तो आपको जो है एज ए नोविस you should actually know that there are number of aspects that you don't know. uh, और दूसरी बात यह है कि जब आप काम कर रहे हैं, the ultimate responsibility of conducting research is basically to seek the truth कि हकीकत क्या है, सही क्या है। This is very important. तो ये जो है there is a very important aspect of uh, actually practicing what is termed as scientific integrity. This is very important aspect of research ethics. Scientific integrity, integrity का मतलब है कि you honestly reproduce. आप जब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आप सही तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आप you are actually applying your reasoning. आप जो है इस बात पे ध्यान रहे हैं कि what are the basic requirements which I am actually fulfilling in during the conduction of the research, regardless of what the scholar's position is there vis-a-vis the history, as far as the research background is concerned. Then the other aspect is very important. There should be empathy. There should be sensitivity towards the subjects that you are actually interviewing. जो informants हैं उसके प्रति आपकी जो है एक sensitivity होना बहुत जरूरी है. The kind of lifestyle they are living, they might be uneducated, they might be very very poor, they might be culturally very very backward. तो लेकिन आपकी सेंसिटिविटी उस अपने इन्फॉर्मेंट्स की तरफ होनी चाहिए. एंड यू शुड नॉट बिहेव लाइक एन अलूफ. ये मैं बार बार अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भी कहता हूँ कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट कि आप एक दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए रिसर्च फील्ड में और आपको जो है जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, जो कॉमनर्स हैं, they will start जो है giving you all the kind of information that you are seeking. This is not at all possible. You are an outsider. तो जो है जो एम्पैथी और जो अंडरस्टैंडिंग और जो एक तरह से जो विलिंगनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, टू जस्ट टू बिलीव दैट यू आर नॉट इनफेलिबल. इनफेलिबल मतलब कि आप भी गलत हो सकते हैं. तो ये सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर इन्फॉर्मेंट्स, द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो सेंसिटिविटी एक्सटेंड्स टू काइंड ऑफ योर ओन बिहेवियर इन द फील्ड. मैं आपका बिहेवियर कहने मतलब है कि अगर आप गांव वाले ऑब्वियसली आपकी जो है इज्जत करते हैं. आप आउटसाइडर हैं, आप जो है नॉलेज सीख करने के लिए गए हैं, उनके बारे में जानने के लिए गए हुए हैं. दे आर ऑब्वियसली विलिंग टू एक्चुअली पार्ट विद नॉलेज. बट अगर आप जो है उनके बीच में इस तरह से बैठते हैं कि जो है उनके पास चेयर नहीं है, बट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द चेयर शुड बी प्रेजेंटेड टू यू, और खाने वो आपको खाना परोसते हैं और यू एक्सपेक्ट, यू कॉल फॉर अ स्पून, चम्मच मिल सकता है क्या. Is the kind of behavior that actually shows your aloofness, and that actually shows the divide that exists between you and the subject. तो ये होना नहीं चाहिए. You should be right down to earth. जैसा उनका माहौल है, as you are in Rome, do as the Romans do, ऐसा कहा जाता है. तो जैसे हालात में वो है, आपको उतने ही डाउन में अपने आप को दिखाना है. So that they don't feel that kind of difference between you and themselves. So जब आप उनकी तरह बिहेव करेंगे इन द सेंस कि उनके लेवल पे आके और उनकी यू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, तो उतना ही ज्यादा दे विल एक्चुअली कंफर्म टू योर रिक्वायरमेंट्स. उतना ही ज्यादा दे विल फील इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग देयर नॉलेज विद यू. दूसरी बात है कि रिसर्च का जो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकती है जिसकी वजह से वी कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर लाइफ. हमें वो फैक्ट्स मिल सकते हैं जिसकी वजह से जो हम ये कह सकते हैं विच आर वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म. हम जो है जब हम प्रोड्यूस करेंगे फॉर द जनरल गुड ऑफ द पब्लिक और इन अ लार्जर audience, obviously they will actually elicit or they will actually incite the kind of
criticism that is actually required to bring about a change. दूसरी बात है कि research can also provide you the alternative choices of actions and their potential consequences. This is very important. It can actually provide the corrective measures. जैसे कि खासकर जैसे हम लोग vulnerable groups की मैं बात करूंगा बाद में कि vulnerable groups में जो face करते हैं how you actually can bring about the change. तो कहने का मतलब है कि जो आपका रिसर्च है मैं बार बार इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूँ that should have a goal that should have a goal to bring about a change in the kind of society the the change in terms of the societal good जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इट्स नॉट दैट कि आपको जो है पीएचडी इसलिए करनी है क्योंकि आपको जो है पीएचडी के बाद जॉब मिलेगा अगर आपका यही गोल रह जाता है तो ये मतलब दैट पीएचडी और दैट थीसिस मैं ये कहूँगा कि वो एक तरह से जो है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एक तरह से वो रद्दी के बास्केट में फेंक दिया that doesn't produce something worthy uh, in terms of the content. और इनफैक्ट यही सवाल एक स्कॉलर को जो है जब वो थीसिस प्रेजेंट करता है जब वो एक्सपर्ट के सामने तो यही सवाल जो है स्कॉलर को पूछा जाता है व्हाट इज द आउटपुट बेसिकली of your research is the basic and the fundamental question that the expert asks and जब वो आउटपुट देने की बात आती है तो that output should have that expert will know basically कि आउटपुट नया है या आउटपुट सब्सटेंशियल है या नहीं है दूसरी बात ये कि हम जो है रिसर्च के दौरान हमें ये पता लग सकता है कि जो वैल्यूज हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं जो लोगों के बीच में है वेदर दे आर वर्दी ऑफ एक्चुअली एमुलेटिंग क्या उनका होना और कंटिन्यू होना जरूरी है या फिर उनमें बदलाव की जरूरत है तो एक तरह से जो है दीज आर द एक्चुअल मैं जब मैं बात कर रहा था इम्पार्शियलिटी एंड द ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज और डाटा कलेक्शन ये सारी चीजों का जो है जब ये जो मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड ये सारे जो है एक रिसर्च स्कॉलर के जो है बैक ऑफ द माइंड में होना जरूरी है बिफोर वन एक्चुअली अंडरटेक्स द काइंड ऑफ रिसर्च दूसरा है कि एज कि हाउ डू एक्चुअली कैरी आउट द इंडिपेंडेंट रिसर्च रिसर्च शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि you should not be forced by the other individual or the institution to undertake a particular kind of research you should not be forced आपके जो है ख्यालात इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपका नजरिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए टू कैरी आउट द रिसर्च आपका ये नहीं है कि जो है आपको एक प्रायर गाइडलाइन दी गई है कि दिस इज हाउ योर रिसर्च शुड बी कंडक्टेड दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर रिसर्च क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो फुलफिल हो नहीं सकते इन टर्म्स कि आप प्रायरली आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से बनाए गए हैं कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बिकॉज जो चीज आप फील्ड में जा रहे हैं एवरीथिंग इज एनोनिमस एवरीथिंग इज नॉट नोन टू यू सो अगर आप जो है योर रिसर्च शुड ऑलवेज बी independent every institution or even the guide should actually promote the independency of the research scholar to conduct his or her own research एक तो इस तरह से जो है कि यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन द रिसर्च अगर आप एक तरह से इंडिविजुअल को परस्यू नहीं करने देते हैं कि जो वो करना चाहता है या करना चाहती है इंडिपेंडेंटली अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने प्रायरली कुछ जो है चीजें सेटअप कर दी है कि दिस इज हाउ द आउटपुट शुड बी ये खासकर इस टाइप के रिसर्च में होता है व्हेन यू आर एक्चुअली टैकलिंग द इश्यूज when you are tackling the issues related to side vulnerable societies, खासकर scheduled castes, scheduled tribes, and other poor segments of the society. और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस जो है आपके आपको लगता है कि गलत है और आपको उसी तरह से जो है आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हकीकत में सही नहीं हो सकता है इसको मैं बार बार कहूँगा दूसरी बात है कि one should individually inculcate the kind of behavior जिसको हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स कहते हैं अगेन वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो है ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए कि यू आर एक्चुअली ब्रीचिंग द रिसर्च एथिक्स तो गाइडलाइंस है रिसर्च एथिक्स का राइट थ्रू आउट द कंडक्शन ऑफ द रिसर्च आप कहीं भी ये जो है कोशिश नहीं करेंगे कि जो है यू आर नॉट फॉलोइंग द एक्चुअल गाइडलाइन और जो एथिकल प्रैक्टिसेस
और ये बहुत जरूरी है कि इसमें जो है इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसमें जो गाइड का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। गाइड जो है प्रायरली बिफोर द student actually undertakes the research or even when he or she is actually preparing for writing a synopsis, वो उसे जो है ये सारे गाइडलाइंस जो है रिसर्च एथिक्स के वो उसको जो है डिलीवर करे एंड व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड ऑफ द रिसर्च स्कॉलर बेसिकली। तो यहाँ जरूरी है कि जो रिसर्च में जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर का मतलब है राइट फ्रॉम द स्टूडेंट हु इज अंडरटेकिंग द रिसर्च, द गाइड, the administration, the institutions, everyone becomes part of this whole research process, and they should also actually cooperate when in institutionalizing governing the research uh, by the research scholar. uh, यहाँ पे जो है मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, रिसर्च गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे कॉलेज में है कि एक रिसर्च काउंसिल है या रिसर्च एक बॉडी है जिसका काम है कि वो 6 मंथ्स का कोर्स है उसको कंडक्ट करा, और वहीं तक उसका काम सीमित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इवन एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं तो ये कहूंगा कि एट द लेवल ऑफ द कॉलेज इटसेल्फ देयर शुड बी ए एथिक्स कमिटी which should be constituted of different members across different faculty. उसमें साइंस का एक बंदा हो सकता है, उसमें आपका सोशियोलॉजी का हो सकता है, आर्ट के और सब्जेक्ट का हो सकता है। तो ये एक जो है 4 या 5 मेंबर कमिटी एक कंस्टिट्यूशनलाइज किया जाए, जो ये देखे कि वो जो बच्चे जो सिनॉप्सिस लिख रहे हैं वो सिनॉप्सिस को वो इवॉल्युएट करें। अभी तक होता ये है कि गाइड ही उसको इवॉल्युएट कर रहा है और कई बार वो भी नहीं करता है। ठीक है, और ये है कि अक्रॉस द डिफरेंट फैकल्टीज जो है वो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर की जो है सिनॉप्सिस को जो है इन टर्म्स ऑफ the content matter, whether he or she has undertaking the ethical guidelines, whether the methodology is correct or not, whether the objectives that he or she wants to जो है fulfill वो सही है या नहीं है। तो ये जो है वो एक कमिटी डिसाइड करेगी, उसको जो है करेक्ट करेगी, और ये करेक्शन सिर्फ आपके सिनॉप्सिस लेवल तक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि फर्स्ट ईयर जब वो अपना लिटरेचर रिव्यू कर रहा है या क्या काम उसने किया है प्रोग्रेस वर्क 1 साल में, 1 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए, 2 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए, एंड बिफोर ही और सी एक्चुअली सबमिट्स द थीसिस। तो ये जो है आपकी रिव्यू कमिटी नॉट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द यूनिवर्सिटी पीपल। वो जो है जरूरी है कि एट द लेवल ऑफ द कॉलेज इटसेल्फ जो है कमिटी शुड बी constituted who will actually look into these issues of plagiarism, look into the issues of unethical practices that the scholar has taken and corrective measures। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा अपना पीएचडी करे और वो सही पीएचडी पूरा करे, तो ये जरूरी है कि वो कमिटी जो है ये इज द राइट काइंड ऑफ एक तरह से जो है बॉडी दैट इज एक्चुअली कैन गिव अ करेक्टिव मेजर्स और करेक्टिव सॉल्यूशन, और वो जो है हिदायत दे सकता है स्टूडेंट को कि जो है आप ये सारी चीजें आपकी गलत है, आप इसको ऐसा कीजिए और ये ऐसा कीजिए। क्योंकि और ये मेजर्स मैंने कहा कि सिनॉप्सिस से शुरू होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड जो भी है एनुअली जो है इस तरह से रिव्यू हो। ऑब्वियसली दिस विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ द कमिटी मेंबर्स, लेकिन ये जो है पॉसिबल है, और ये हम लोग जो है इस तरह की एक्टिविटीज एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ द कॉलेज इटसेल्फ। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। दूसरा है कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं स्कॉलर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू एक्चुअली बिहेव टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, अदर इंडिविजुअल्स हैं उनके प्रति आपका जो है बिहेवियर कैसा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Do you actually respect the dignity of the informants? Do you actually respect the dignity of the subjects जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा शुरुआत में सेंसिटिव होने की, तो सेंसिटिव का मतलब ये है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, आई वाज वेरी वेरी एक तरह से हार्ड ऑन माय स्टूडेंट्स। मैं जो है एक बार क्लास में घुस गया तो कोई बच्चा क्लास में एंटर नहीं कर सकता था सब्सिक्वेंट टू माय एंट्री इनटू द क्लास। आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि 2 मिनट या 3 मिनट भी लेट हो गया, आई वुड से नो बेटा आई एम सॉरी। लेकिन जैसे जैसे जो मैंने रिसर्च वर्क किया अपने फील्ड एरिया में, मैं जो है दूर दराज के गाँव में गया, and then I could actually relate the kind of conditions which are faced by those
for students. Now I would ask the student, where do you actually belong? क्लास में पूछूंगा कि मैं आप किस गांव से belong करते हैं. And then I could actually relate myself to that particular kind. The village कितना remote है, road है, से 20 किलोमीटर दूर है. किस तरह का रास्ता है, किस तरह का वहाँ का लाइफ स्टाइल है, किस तरह का जो है पॉवर्टी इज इन एग्जिस्टेंट. तो मुझे ये फील होता था कि जो है ये जो बच्चा है जिस एरिया को बिलोंग करता है, मेरे लिए इतना बहुत है कि ये बच्चा वहां से एमएससी में आ गया है, वहां से ये बीएससी कर रहा है. तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस बच्चे के लिए कि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट और द सोशल एनवायरनमेंट और द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड द काइंड ऑफ पोअर इकोनॉमिक कंडीशंस को बिलोंग करते हुए वो बच्चा अभी भी हायर एजुकेशन को आया है. तो दिस वाज द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी जो मेरे अंदर आई, और आई बिकेम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो मैंने जब जो है कहने मतलब है कि द रिसर्च एक्चुअली brings about a change in your mindset. It brings about a change in your behavior. Only when you are sensitive towards the kind of individuals or towards the kind of the subject or towards the kind of the lifestyle or the culture that one particular जो फील्ड है जहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार जो हम लोग जो है नामिक ग्लेशियर में फील्ड वर्क के लिए गए हुए थे. तो हम लोग ऑब्वियसली जो है पोर्टर्स को हाइड करते हैं. तो वन ऑफ द पोर्टर्स जो है जो उसने जो है हमें मना कर दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए तो आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं आपके जो है क्योंकि आपका जो वर्क है वो काफी लंबा है, तो मैं उतने लंबे अंतराल में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा. आई विल ओनली बी देयर फॉर इनिशियल 4 to 5 days. हमने कहा चलो मिल तो गया है, और लेट्स सी कि आगे क्या कंडीशंस होती है. हम उसको जो है फिर जो है कोशिश करेंगे कि वो मान जाए और हमारे साथ रहे. लेकिन 5वें दिन जो है उस रिपोर्टर ने कहा कि सॉरी, मुझे अब अपना गांव जाना है क्योंकि मुझे गांव में ये कल्टीवेशन सीजन आया, तो मुझे अपने फील्ड को तैयार करना है. तो हमने कहा कि ऑब्वियसली कि वो आपका फील्ड का आकार कितना है, वो एग्रीकल्चर से आप कितना जो है आमदनी कितनी हो जाएगी आप. उसने कहा कि अब फील्ड तो बहुत छोटा है, ज्यादा ज्यादा जो हमारी आमदनी अगर हम कहें तो वो ज्यादा ज्यादा 2,000 या 3,000 की होगी. तो हमने कहा 3,000 के हम 6,000 तक आपको दे देंगे अगर हम आप हमारे साथ अगले 5 दिन के लिए और रहिए. तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं सॉरी, मुझे अपने काम को गाँव को जाना ही जाना. खैर हमें बड़ा हास्यास्पद लगा. इट वाज नॉट एट ऑल. हमने कहा कि कहाँ वो मेहनत करेगा, क्रॉप कब राइप होगी, कब वो कंटिन्यू हार्वेस्ट करेगा, ठीक है, या कब कंज्यूम करेगा, और उसके इतनी मेहनत और इतना तब तो उसके बाद उसके बदले अगर हम उसको 3,000 के बदले अगर 6,000 एट द एंड ऑफ द फील्ड वर्क देते हैं तो वो तो फायदे का सौदा हुआ. खैर वो बंदा चला गया. उसके बाद शाम को मैंने दूसरे पॉटर से बात की कि क्या वो उसका डिसीजन सही था. उसने कहा सर डिसीजन बिल्कुल सही था, उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता. एंड इट वाज क्वाइट रिवीलिंग. मैंने कहा कि ऐसा क्यों, मतलब जो है कहाँ तो जो है वो 3,000 कमा रहा है उस कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, और जो है दूसरी तरफ हम जो है सॉरी, तो कहाँ तो हम जो है उसको जो है उसके डबल अमाउंट दे रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि जो है इट इज नॉट जस्ट मनी विच इज ऑफ कंसर्न टू अस. हमारे लिए जरूरी है कि हम कल्टीवेट कर रहे हैं. अगर हम लोग ये अपने काम को ही छोड़ देंगे तो हम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन आवर लैंड्स. हम जो है ये भूल जाएंगे कि किस तरह कल्टीवेट किया जाता है. हम ये भूल जाएंगे कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट एक्चुअली गोज विद द कल्टीवेशन, व्हाट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट गोज विद द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स. तो एक तरह से जो है ये मेरे लिए एक तरह से जो है आई ओपनर था कि आई वाज जो है ओनली लुकिंग एट द प्रिज्म थ्रू वन साइड. एक ही आईने से चीजों को मैं देख रहा था इन टर्म्स ऑफ कि अल्टीमेट कल्टीवेशन का एम जो है टू अर्न है, ठीक है, लेकिन उसके कई आयाम थे जो जिसको मैं नजरअंदाज कर रहा था. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जाते हैं फील्ड में यू आर बेसिकली अ नोविस, क्योंकि आप जो है यू डोंट नो द एंटायर सब्जेक्ट, और वो एंटायर सब्जेक्ट का कितने एस्पेक्ट्स हैं वो आप नहीं जानते. तो देयर आर होल लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट दैट एक्चुअली गोज इनटू वन पर्टिकुलर एक्टिविटी. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर विलेज में देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग कैरी आउट, तो जो है आपकी एक्टिविटीज शुड और बी ऑल एनकम्पेंसिंग, तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा मैं कि इन द ईयर 2010 मोस्ट प्रोबेबली आई वाज इनवाइटेड फॉर
लेक्चर इन सिक्किम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो वीसी थे, लामा, महेंद्र पी लामा, वन ऑफ द यंगेस्ट वीसीज इन द कंट्री, उन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव तरीका अपनाया था। उन्होंने ये कहा कि हमारे जितने स्कॉलर्स हैं, इरेस्पेक्टिव कि वो साइंस को बिलोंग करते हैं, आर्ट्स को बिलोंग करते हैं, या फिर वो किसी और स्ट्रीम के हैं, हम ये मैंडेट करते हैं उनको कि एनुअली ऑल ऑफ दीज स्कॉलर्स विल एक्चुअली विजिट नियर बाय विलेजेस accompanied by different faculty members. Okay? तो एक साइंस का स्कॉलर इज accompanied by a sociology, वो जो है दूसरा आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, और एक ग्रुप में जो है एंड इवेंचुअली देयर आर डिफरेंट टीचर्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टी, दे आर आल्सो अकम्पनिंग दिस होल ग्रुप। तो एक ग्रुप में जब वो विलेज में जाते हैं तो एक इकोलॉजी वाला स्टूडेंट तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेगा, बट ही विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय द क्वेश्चन बीइंग रेज्ड बाय अ सोशियोलॉजी। सिमिलरली एक इकोनॉमिक स्टूडेंट क्या क्वेश्चन रेज कर रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ डाटा बीइंग gathered by an economic student will also influence the activity of the person जो इकोलॉजी पे ही रिलेटेड काम कर रहा है या इथनो बोट्टी पे ही काम कर रहा है। सो द एक्चुअल जो एक तरह से कहने का मतलब है कि जो विजिट आप कर रहे हैं फील्ड वर्क में, that becomes optimized not in terms of only your time but also in terms of the all different kind of resources that is actually available, not just with the informants but also the accompanying faculty जो आपको research field में accompany। तो आपको एक पूरा जो है होलिस्टिक एक तरह से जो है इंफॉर्मेशन यू एक्चुअली गेन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, इज इट पॉसिबल टू कैरी आउट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इवन एट आवर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है एक स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर है उसको जो है ये तमाम जानकारियां जो है जो उसको एक साथ उपलब्ध हो जाए, सो दैट उसका जो माइंडसेट है, द परसेप्शन है, और thereby जो वो अप्रिशिएट करेगा द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट इज बीइंग लेड बाय द इंडिविजुअल। कि उस स्थिति में कई बार हम लोग सुनते हैं बेसिकली कि भाई फला फला गांव है, हाई एल्टीट्यूड में है, वहां लोग मीट खाते हैं, मीट के बिना रह ही नहीं सकते, शराब पीते हैं। ठीक है, अगर हम इस माइंडसेट से गए कि ये शराब पीना गलत है और ये मीट खाना गलत है, तो वो आपका परसेप्शन जो है वो बड़ा कन्फाइंड है। ठीक है, जबकि आपको ये हकीकत में जानना चाहिए कि जो है जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पे लैंड एरिया बिकम्स वेरी वेरी लिमिटेड, एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स वेरी वेरी लिमिटेड, द ग्रोइंग पीरियड बिकम्स वेरी वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम काइंड ऑफ टेम्परेचर। तो जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इज बिकमिंग अफेक्टेड, आप यू आर फोर्स टू रिलाई ऑन द वाइल्ड सोर्सेज इफ दे आर एनिमल्स, दैट बी गुड बेसिकली। तो आप कारण जानते हैं कि अगर कोई किसी तरह का लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। मैं अपना एक और एग्जांपल आपको जो है शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे एज फार रिसर्च इज कंसर्न। आई वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द सेक्रेड ग्रुप्स, जैसे कि जो है मेरे इंट्रोडक्शन में भी डॉक्टर गुरुज ने लिखा। सेक्रेड ग्रुप्स आर इंस्टीट्यूशंस जो है विच आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाय ट्रेडिशनल नॉर्म्स। और वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स क्या है कि एक सेक्रेड ग्रुप आपका डे वन है, एक फॉरेस्ट है। हाउ डू यू एक्चुअली जो है रेगुलराइज द यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो एक रेगुलेटरी मेजर जो है हैव बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू रिलीजन बेसिकली। और रिलीजन डिफाइन करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू एक्चुअली एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट, और किस तरह से जो है फॉरेस्ट को रेगुलेटेड नेचर में जो है उसको जो है उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ठीक है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टेबूज हैं, टेबूज आर बेसिकली द नोज बेसिकली कि आप जो है ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेबूज जो गवर्न करता है आपके सेक्रेट ग्रुप्स को, वो है आपका सेगमेंट टेबू। सेगमेंट टेबू मतलब है कि वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी or one segment of the village is actually restricted for from making use of the forest resources। वो segment basically आपका जो है ladies हैं during the menstrual period, वो segment basically is the scheduled caste जो which are prohibited from entering the forest। तो मेरा जो एक तरह से नॉलेज बेस था विज विज इकोलॉजी, मेरा ये मानना था और मेरा जो ऑब्जर्वेशन जो मुझे सार्थक सार्थक भी नजर आता था वो ये था कि जो है प्राइमरली ये जो लेडीज को आप अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज अगर आप कंडेम कर रहे हैं फ्रॉम एंटरिंग टू द फॉरेस्ट, या शेड्यूल कास्ट हु डू नॉट हैव देयर ओन रिसोर्सेज, या very very limited resources available with the scheduled caste people in the place, if they are actually restricted from entering the forest, इसका मतलब है कि you are actually consuming the forest। आप जो है अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोकना चाहते हैं तो ये दो सेगमेंट को आप रोक दीजिए, तो आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और मुझे ये जो कंक्लूजन जो मैंने डिराइव किया फ्रॉम ecological perspective, from in terms of the conservation perspective, मुझे लगा ये बड़ा सही है, and even I published a number of papers to accept me।
लेकिन सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे मैंने अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया, इंक्लूडिंग सम ऑफ द लिटरेचर बाय रॉय रेपापोर्ट, जो एक रिनोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंड अदर एंथ्रोपोलॉजी, तो मुझे लगा कि मैं गलत था, या फिर मेरा जो ये सोचना कि दिस हैज टू डू विद द कंजर्वेशन एस्पेक्ट नीड नॉट एंटायरली बी राइट। हो सकता है कि जो है सोसाइटी जो है एक तरह से जो हैव्स और हैव नॉट के बीच में जो डिवाइड होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, you are actually condemning or you are actually restricting the one particular segment of the people from partaking the use of the forest। वहां पे आपका एक सोशल डिवाइड भी हो सकता है, वहां पे आपका एक कास्ट डिवाइड भी हो सकता है, and which might be more prominent as far as which might be more truer than what I was actually expecting from my own ecological perspective। तो कहने का मतलब है कि आपका जो नजरिया है वो ब्रॉड बेस्ड तभी हो सकता है when you are actually exposed to different kind of literature, you are exposed to different faculties also। तो ये जो है एक सार्थक कदम हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप ये प्रिटेंड मत करें प्लीज कि यू आर ब्रिलियंट और यू आर मोर जो है नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट देन द सब्जेक्ट्स दे आर यू एक्चुअली इंटरव्यूइंग। उनके डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, और उन्होंने जो इजाद किया है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, in terms of their religion, in terms of the lifestyle they are actually living, it's primarily because of the kind of conditions they are actually living, the kind of the resources that are actually available with them। There can be different aspects, वो तभी आप जानेंगे जब आप encompass करते हैं different kind of faculties, different kinds of subjects in your research जो है activity। दूसरी बात है कि जो है आपको जो है उनका कल्चर, मैंने कहा कि यू शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लीडिंग। मैं इसमें एक एग्जांपल जो है, मैं रिसेंटली अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जिसने मुझे जो है अपने एक टीचर के बारे में बताया, जो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने कहा कि फला फला ने जो है हमारे बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ही एक्चुअली बिलोंग्स टू रंग कम्युनिटी। रंग मतलब जिनको हम भोटिया कहते हैं, भोटिया इज अ डेरिवेटरी टर्म फॉर दिस पीपल। वो अपने आप को रंग कहते हैं या सौका कहते हैं। तो सी एक्चुअली बिलोंग्स टू रंग। रंग्स जो है आपके दारमा, चौदास और प्यास वैली में रहते हैं, उनको रंग्स कहते हैं। तो रंग के उसमें जो है दे टिल अराउंड 1 or 2 decades बैक दे हैड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड रंगबंग। और ये रंगबंग जो है, इसमें क्या होता था कि ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग डॉर्मेटरी भी कहते हैं। जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो जानेंगे इसको, जिसको जो है अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको गोतुल कहते हैं। तो ये जो गोतुल या फिर जो डॉर्मेटरीज है या फिर जिसको हम रंगबंग यहाँ पे कहते हैं, ये रंगभंग इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे जो है एवरीवन यूज्ड टू गैदर इन द इवनिंग। अपने काम उनको खत्म करने के बाद जो है आफ्टर द डिनर, all the youngsters and including the elders, they used to gather together, they used to enjoy, they used to have the music, they used to have the dance। and इस दौरान जो है जो elders folk थे, they used to actually convey their culture, the traditional knowledge, they used to pass down those traditional knowledge through the folklores, the folk songs। और इस तरह से जो है एक कम्युनल फीलिंग, कम्युनल हार्मनी इजाद होती थी। और लोग जो यंगस्टर जो अपने फोकलोर, अपने जो पास्ट है उसके बारे में जो है नॉलेज गैदर करते थे। दे यूज्ड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ जो एक तरह से रिच फोकलोर या फोक सॉन्ग्स दे वर एक्चुअली इनहेरिटिंग सबसे। और फिर उसके बाद क्या करते थे, ये ताकुब के बाद सबके सब वहीं सो जाते थे। ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि जो है लंबे अंतराल में जो इस तरह की जो सोसाइटीज है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, रंगबंग, गोकुल या फिर डोमेट्री जिसको मैं कह रहा हूँ, ये एक क्लोज नीट सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। दे आर एक्चुअली अलूफ, दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम द रोड हेड। और जो है ये जो एक तरह से सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसके जो है एक तरह से इंट्रोडक्शन में नहीं आई है। तो जो है कहने का मतलब है कि जैसे ये आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आए तो ऑब्वियसली कुछ गलत चीजें वहां होने लगी। एंड फिर ये जो है लोग खुद ही अपनी जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी उससे शर्मसार हुए, और फिर उसके बाद ये एक्टिविटी उन्होंने बंद कर दी। लेकिन बंद किए हुए अभी 20 साल हो गए हैं, उसके बावजूद जो है अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड जो है वो रंगबंग के बारे में लिखता है, और इस तरह से लिखता है कि वो रंगबंग अभी भी हो रहा है। ठीक है। और अभी भी हो रहा है, इसका मतलब है कि यू आर नॉट एक्चुअल सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू। जो चीज होती थी और उसके बारे, और जो चीज गलत होता था, पहली बात तो गलत तो होता नहीं था, गलत तो बाद में हुआ। ठीक है। और उसके बाद वो स्टॉप भी हो गई है, लेकिन आप ऐसा लिखते हैं क्योंकि आप यू वांट टू मेक योर पेपर अट्रैक्टिव एनफ। आप चीजों को सेंसेशनलाइज करते हो, एंड सो दैट
द रीडरशिप इज मोर। ये बड़ा, मैं इस पे जो है इवन गांधी के बारे में जब लिखा जाता है आजकल किताबें, तो किताबें ऐसी लिखी जाती है तो उसको कैरेक्टर को क्वेश्चन करती है, क्योंकि हम शायद वही पढ़ना चाहते हैं। तो जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं वो चीज जो है लिखी जाती है और वो जो है ज्यादा सेल होता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो है दैट एक्चुअली इज गोइंग विद इवन एज फार द रिसर्च इज कंसर्न। में ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन बनी क्यों, ठीक है, क्या इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है और जगह भी होते हैं, अगर होते हैं तो व्हाट आर द रिजेबलेंसेस, और वो क्या रोल प्ले करता था एज फार द सोसाइटी वाज कंसर्न, एज फार द क्लोज नेट जो हार्मनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, द राइट्स एंड व्हाट वर द प्रोबेबल रॉन्ग्स। तो ये जानना जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली ड्राइव द कंक्लूजन्स। तो एक तरफा हो सकता है, जो आपके सिर्फ वन पर्टिकुलर जो आपके एस्पेक्ट से जो चीजों को देख रहे हैं from your own narrow vision basically, जिस narrow vision के साथ आप किसी चीज को देख रहे हैं वही चीज आप रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। your when conducting the research your vision should be very very broad। तो ये जो रेस्पेक्ट है for the स्टेक होल्डर्स, फॉर द इन्फॉर्मेंट्स, दैट रेस्पेक्ट, द सेंसिटिविटी और जो एम्पैथी की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट एप्रिसिएशन फॉर द कल्चरल फेसेट्स ऑफ द लाइफ, दैट शुड ऑलवेज बी देयर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दैट एस्पेक्ट, जो एम्पैथी की जो मैं बात कर रहा हूँ, द सेंसिटिविटी की जो बात कर रहा हूँ, दैट शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिस व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च। ये बात है कि आप जो है यू कैन नॉट कंपेयर द स्टेक होल्डर्स फॉर फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन योर रिसर्च। आप एक क्वेश्चनर बना के चले गए हैं वहां पे, और आप चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल जिसको आप जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको आप इंटरव्यू का पार्ट बनाना चाहते हैं, आप उसको फोर्स करके कि नहीं आपको इसमें भाग लेना ही लेना, नॉट फोर्स। तो पार्टिसिपेशन है आपका जो रिसर्च जो स्टेक होल्डर्स का है, जो पार्टिसिपेशन आपका जो विलेजर्स का या कॉमनर्स का जिसको आप इंटरव्यू करें, वो वॉलंटरी है। आप किसी भी तरह से उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको किसी भी तरह से जो है एक तरह से जो है यू कैन एनकरेज टू बी पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, बट यू कैन नॉट फोर्स द इंडिविजुअल फ्रॉम बिकमिंग पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी कंकरेंस, उनका विलिंगनेस, दैट इज एक्चुअली सॉल्व प्रायर टू एक्चुअली जो है उनको जो है आपके क्वेश्चन है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स उनके साथ शेयर करेंगे कि दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है, जो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, मेरा जो पर्पज क्या है इस रिसर्च को कंडक्ट करने का। ये कंडक्ट करने के बाद मैं इस रिसर्च के साथ क्या करने जा रहा हूँ, वेदर यू आर गोइंग टू पब्लिश इट, वेदर यू वांट टू ब्रिंग दिस योर रिसर्च आउटपुट्स इन द पब्लिक डोमेन। ये सारी सारी चीज जो जानकारी है आपको जो है उन इन्फॉर्मेंट के साथ शेयर करना जरूरी है, ताकि उनको पता चले कि जो वो शेयर करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन, बंद कर दो यार, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करना चाह रहे हो, आ, उसके प्रोज एंड कॉन्स वो खुद उसको इवॉल्यूएट करेंगे। और अगर उनको लगता है कि हाँ इसके बावजूद हम दे सकते हैं और इससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, देन दे शुड बी इन्वॉल्व। इसको लेकर हटाओ यहाँ से, हाँ, दे शुड बी इन्वॉल्व इन द रिसर्च। कई बार ऐसा होता है रिसर्च में जो है लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर। आपने अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चनर एक जो है आप इंग्लिश में दे दिया, ऑब्वियसली एवरी टाइम जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे अपने इंफॉर्मेंट से, तो आप जो है बार बार उसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो जरूरी ये है कि आप उसको बाइलिंगुअल बना दीजिए, उसको हिंदी में बना दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर हो सकता है कोशिश करें कि वहीं का एक जो है स्टूडेंट या वहीं का एक इंडिविजुअल विच इज वेल वर्स्ड विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर एक्चुअली सीकिंग, या जिसको प्रायरली आप सारे क्वेश्चनर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दें, तो वो आपके उसमें एक इंटरप्रेटर का काम करेगा। और वो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा, क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो जो है पीपल विल कन्फाइड, दे विल हैव मोर फेथ when one of the individual from their own committee is taking part in your research। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको जो है समय जो आपको कन्विंस करने में लगेगा, समय जो आपका जो है व्यतीत होगा वो एक हर एक क्वेश्चन को समझाने में, तो वो एक आपका इंटरप्रेटर, वो एक आदमी जो आपका जो एक तरह से नेटिव लैंग्वेज या नेटिवली बिलोंग करता है, वो इस काम को आसानी से कर सकता है। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि कई बार हमें जो है हम चीजों को आसान करने के लिए कोशिश करते हैं कि कैमरा अपने साथ ले जाएं, वीडियो रिकॉर्डर अपने साथ ले जाएं, या फिर टेप रिकॉर्डर अपने पास ले जाएं। तो इसका मतलब जब टेप रिकॉर्डर का इसका मतलब तो लोगों की एक भ्रांति है, क्या वो सही भी हो सकता है कि उनको मालूम है कि टेप रिकॉर्डर में जो हम बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दैट विल रिमेन फॉर पोस्टेरिटी। जो वीडियो चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है, दैट विल रिमेन फॉर पोस्टेरिटी। तो जो है एक प्रायर कंसेंट यही भी जरूरी है कि आप हम आपकी जो है क्या हम आपके
जो बातें हैं उसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या हम आपकी जानकारी को टेप रिकॉर्डर में जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एट एवरी लेवल आपको कोशिश करनी है कि जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं दे शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। तो आप काम करना चाहिए, देयर कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप आगे करना चाह रहे हैं, रिसर्च थीसिस को पब्लिश करना या आर्टिकल्स के द्वारा एक व्यापक उसमें सोसाइटी में जो है इसको रिप्रोड्यूस करना, ये सारी जानकारी आपको जो है इन्फॉर्मेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कहने मतलब है कि यू शुड एक्चुअली एक्सरसाइज complete transparency in the kind of work you are actually conducting in the field. कंसेंट जैसा कि मैंने कहा वो आपका लेना जरूरी है विदाउट एनी प्रेशराइजिंग। ठीक है, आपको उनको पूरा इंफॉर्मेशन देना है, और उसके बाद जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी भी उनको देनी है कि अगर वो ये नहीं चाहते हैं कि फर्दर रिसर्च में वो भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको उनको फोर्स नहीं करना है। नहीं, आपने इतने दिन दिया, इतना मदद की, अब आपको जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक मुझे सारी जानकारी नहीं मिलती, नहीं आपको करना, नहीं नहीं, इट इज देयर। जो है मैंने कहा कि द एक्शन एंड द जो एक तरह से जो शेयरिंग ऑफ द नॉलेज है दैट इज एंटायरली वॉलंटरी। तीसरी बात यह है कि यू शुड हैव द रिगार्ड फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है कई बार हम लोग जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो हम ऐसी पार्टी का भी इंफॉर्मेशन हमें मिलने लग जाता है विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिसर्च। वो हो सकता है कि हम किसी मेल फोक से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके द्वारा हमें जो है औरों की भी जानकारी मिलने लगी, लेडीज के बारे में, दूसरे कास्ट के बारे में भी। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत एहतियात बरतना होता है कि दो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ऑफ द थर्ड पार्टी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द रिसर्च, कि हम जो है उसमें जो है अपना